हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई कैन सी few people have already not joined. We'll just wait a minute, okay, or few seconds, then we'll gonna start. Let me know if my voice is clear, the screen is visible. Hmm, cool. I can see few people, which those sessions are important, are not joining. Uh, Harsh, can you ping Deepak? Cool. Shailesh, can you ping Darshini, Imperial, and other two members if you are not here? Okay. Cool. We are already little late. We just gonna start the session. So, welcome back, everyone. Um, Apologies, the previous session was left, and then we have to take a leave as per our schedule. I hope आपने ये 2 दिन अच्छे से कंज्यूम किया होगा and have done lots of Kotlin stuff at your free time. जैसे हर्ष ने मेरे से कुछ डाउट पूछे थे, आई वॉज वेरी हैप्पी टू नो दैट ही वॉज ट्राइंग टू लर्न थिंग। मैंने देखा उसने असाइनमेंट करने का ट्राई किया। ओके, फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन प्लीज बी ऑन टाइम। ओके, like we like I don't have to explicitly tag you all uh, and remind you about the session. Okay, and I was uh, I didn't post it about the assignment thinking that people might come up with posting their doubts and all those stuff by themselves, but I think the message didn't convey to you all. I will from now timing I will be explicitly providing the assignment. Okay. uh, how how much enthusiastic you are, and how much you interact, and how uh, vividly you present the assignment tells me a lot that how much you are interested. Okay, so the thing is key, this course guarantees that you will not only be able to build good Android projects or apps at the end of the session, but to provide you internships and some projects as well with some stipend. But the catch here is that if you are not capable and if you didn't pass my exam, that will be that basically that is required in order to get the project and internship, right? So uh, keep pushing, keep learning. That will mark the seal that you might be getting an internship. Okay, so moving forward, for today we have this topic. We will be learning about Android now. Okay, बहुत Kotlin सीखे. Okay, we will be learning about Android. Okay, कुछ basic देखेंगे अपन. Okay, and we will be building few things in the UI. Okay, थोड़ा सा Kotlin का एक एक चीज रहेगा, that is not very necessary to be introduced, but it's always a good idea to keep you keep sharing latest and keep sharing the features of Kotlin so that आप अगर कुछ बनाओ तो आप उन सब चीज़ों को यूज कर पाओ. Okay, so the table of content will look like this. आज हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, जेटपैक
के कुछ लेआउट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, स्कोप फंक्शंस पढ़ेंगे, और अपन थोड़ा बहुत फ्रैगमेंट के बारे में जानेंगे। ओके, कि पहले एंड्रॉइड प्रोजेक्ट्स कैसे बनते थे, अब कैसे बनते हैं। ओके, करेक्ट। I got a very good doubt from Onkar before he enrolled to the course that क्या हम ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे क्या? Okay. uh, to answer that also, we have uh, we have kept this fragment part especially in this session, कि हम ये भी देखेंगे कि पुराने टाइम में या आज से 1 डेढ़ साल पहले एंड्रॉइड ऐप्स कैसे बनते थे। ओके, और अभी क्या चेंजेस आए हैं। ओके, तो मैं आपको पिछला पढ़ाऊँ जो इस्तेमाल अभी इंडस्ट्री में नहीं होता है, डजंट मेक सेंस, राइट? बट ये कोर्स ऐसे डिजाइंड है कि अगर आपको उसकी जरूरत पड़ी भी तो यू कैन इजीली डू दैट। ओके, देयर इज नो बैरियर, no knowledge barrier on that. Okay, cool. So uh, uh, I will first start with very uh, very widely used Kotlin feature. Okay, are generally those scope functions. Okay, अगर आप जावा बैकग्राउंड से आते हो या जावा स्क्रिप्ट से आते हो या डार्ट से आते हो या पाइथन से आते हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट पाइथन, बट ये कुछ ऐसी चीज है ना जो जनरली मेक यू लाइक कॉटलिन से एकदम दीवानापन ही हो जाता है। ओके, I'll share about those scope functions. Okay, so we gonna go to this link I will share you. Okay, uh, मैंने एक चीज नोटिस की while going through my lectures कि it's always a good idea कि we keep our official documentation open while learning। इससे होगा क्या कि आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत पड़ेगी कि मेरे को कुछ देखना है समझना है तो आई विल ओपन द डॉक्यूमेंटेशन। ओके, और डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा सोर्स है कि स्पेशली ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा सोर्स है कि रिगार्डिंग दैट थिंग जितना आपको पता होना चाहिए वो डॉक्यूमेंटेशन में है। ओके, बट इसका ये मतलब नहीं है कि इतना ही पढ़ लिए तो चीज़ें खत्म। नो, बहुत सारी चीज़ें भी रहती है विच कम्स विथ एक्सपीरियंस एंड मोर वाइटल यूज केस, बट इट्स ऑलवेज एन गुड आइडिया कि अपन चीज़ें ओपन रखें एंड साथ ही साथ उसको एक्सप्लोर करते रहें। ओके, तो नाउ स्कोप फंक्शंस जनरली ज़रूरी नहीं है कि हमें इस्तेमाल करना है। इट इज़ जनरली मेंट टू make our code more readable, okay, more presentable, and help us to avoid writing duplicates things, or help us to write better code actually. Okay, so uh, before going into the very detail, we'll see few things. Okay, uh, okay, so कहाँ गया कहाँ गया हाँ, सो जनरली जब हम स्कोप फंक्शंस के बारे में बात करेंगे या जब आपका स्कोप फंक्शंस यूज करने का टाइम आएगा, ओके, देयर माइट बी चांस कि यू विल बी गेट लिटिल कंफ्यूज कि कौन सा कहाँ पे करें। ओके, तो जनरली आपको ये दो चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, when you need to use this and when you need to use it। Okay, so before jumping into that, I'll just go to the very basic one। Okay, then we'll cover the top portion। पहले अपन थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, so now uh, talking about let। Okay, so let ऐसा एक scope function है which you will be using widely। Most of the time you will be using let। Okay, in your code base I will be using let। Okay, and it is generally used
to check for the non-null cases. Okay, something like this. Okay, तो अब ये तो चीज हो गई। अब और क्या फंक्शनैलिटी देता है? ओके, सो वी विल सी इन एन एग्जांपल। ओके, सो मान लो क्या करे, हाँ, मान लो एक क्लास बनाते हैं। ओके, पर्सन, well, name of type string, which is a nullable of type null. Okay, now I will create age of type int, of interface int of type null. Okay, now I will create a function, print some details. Okay, uh, hmm, give person details. Okay, now as usual what I'll do, I'll create a person object. Okay, of type person. Okay, name will be Niket, age will be 23. Okay, uh, I will make it var for better representative. Okay, now अब हुआ क्या, अभी हमें जनरली चीज़ों को यूज़ करना पड़ता था। मान लो हमें अगर फंक्शन यूज़ करना है, मान लो हमें एज वेरिएबल यूज़ करना है, नेम वेरिएबल यूज़ करना है, तभी तक हम लोग एग्जांपल में क्या देखते आ रहे थे कि आई जनरली नीड टू कॉल दिस पर्सन ऑब्जेक्ट एंड कॉल द नेम ऑब्जेक्ट ऑन इट, राइट? For example, I need to access the age, I have to do this. I have to access the method, I have to do this, right? मान लो ये पर्सन नल है, राइट? तो मेरे को क्या करना पड़ता था, जनरली आई हैव टू डू दिस। ओके, ठीक है, नेम इज ऑफ टाइप स्ट्रिंग नलेबल, तो हम क्या करेंगे, जनरली इसको ऐसे रैप अप कर देंगे कि अगर नल वैल्यू आई तो जनरली हम इसको कुछ वैल्यू दे पाए बाय डिफॉल्ट, राइट? तो द पॉइंट इज कि हमें हमेशा इस पर्सन को कॉल करना पड़ता था, इस पर्सन को यूज करना पड़ता था ऑब्जेक्ट को, एंड ऑन दैट वी यूज टू डू सम कॉलिंग और एक्सेस द मेथड। ओके, now the better way of what you can do, okay, आप क्या कर सकते हो, लेट्स से यू वांटेड टू एक्सेस दिस ऑल प्रॉपर्टीज, आप क्या कर सकते हो, पर्सन डॉट लेट करोगे ना, ओके, इट गिव्स दिस इट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, इट रिप्रेजेंट टू दिस पर्सन ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ अब मेरे को करना क्या है, इट डॉट नेम, आई कैन डू दैट। ओके, एंड आई कैन सेट अप इट टू anything else. Let's say negate 2. Okay, something like that. I can do it dot age. Okay, uh, equal to 24. Okay, I can do it dot give person, give person detail. Okay, ये थोड़ा नाम गलत हो गया, I'll just do अभी के लिए अपन ये कर देते हैं, right? So now you can see कि rather than calling person again and again, what I have to do, I have to call just the it part, and based on that I can do all those operations, right? So whenever you wanted to do certain bulk of actions on an object, you can use let, okay, and do the same thing on it, just with the object this lambda is returning। okay, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ। ओके, दिस आर्ग्यूमेंट को मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, एंड सिमिलरली आई हैव टू चेंज इट इन द ऑल द प्लेस। ओके, नाउ this is one part। okay, let's see, अगर
um, um, a person is nullable. Okay, a person is of type nullable. Okay, and if I do person 2 and let, तो इससे होगा क्या पता है, rather than checking कि if person 2 dot name is not equal to null, ये क्या करेगा, ये चेक कर लेगा कि पर्सन नल तो नहीं है. ओके, दिस होल पर्सन इज नॉट नल, देन ओनली दिस कोड विल बी गेट एग्जीक्यूटेड, एंड देन यू आर श्योर कि हाँ भाई दिस प्रॉपर्टीज कंटेन हियर आर वैलिड. ओके, so I can still do it dot name. Okay, so generally let is used to check if a person, sorry, if a object is not null. Okay, for example मैं आपको इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ. प्रिंट एलन is this person null. Okay, so now हमने डिफाइन किया है कि पर्सन इज नल. ओके, एंड मैंने ये लेट चेक लगा लिया विद दिस नल चेक. व्हाट शुड बी द आउटपुट? क्या ये प्रिंट स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट होगा और नॉट? ओके, करेक्ट. so we'll we'll give it a try. Okay, so give person detail is getting print because हमने इसको यहाँ पे कॉल किया था. this is getting print, but this thing is not getting print. the reason being कि person null हो गया, right? and because ये null हो गया तो ये let block execute ही नहीं हुआ. okay, so traditionally let का दो use case है. it generally avoid writing this if uh, person is not equal to null, जैसे हम लोग ट्रेडिशनली जावा या जावास्क्रिप्ट वगैरह में करते आते थे. rather than do rather than that we just what we do this null check and do the let. Okay, now and the other use case is that if you wanted to access the object. okay, like जैसे आप it देख सकते हो, यहाँ पे it is representing person, right? so when you wanted to access the object and do operations on that properties or on that methods uh, इन अ बल्क, लाइक कि आपको जैसे बार बार पर्सन डॉट नेम पर्सन डॉट एज नहीं करना है, तो यू कैन डू दिस. ओके, यू कैन यूज दिस लेट ब्लॉक. ओके, so generally we'll see an example जैसे कि when list, okay, of mutable list, okay, of type int, okay, nullable. okay, I have created a mutable list of, and I can provide few numbers here. okay, I can do list, एंड अगर जैसे मान लो मेरे को इस लिस्ट को पॉपुलेट कराना है अपनी यूआई में, बट मैं तो नहीं चाहूंगा कि नल डेटा चले जाए और मेरा यूआई ना दिखे. तो व्हाट आई डू, आई विल डू लिस्ट. ओके, I will do a null check completely on that list. Okay, and then I can access this list and I can do any respective uh, 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 respective function on that. Okay, so if I do this, okay, and if I do this, okay, so because the list is non nullable, okay, I'm able to access it and I'm able to get the things or the things with this object. Okay, so generally that is used when you wanted to do a null check basically. Okay, now हो सकता है कि ये थोड़ा सा सेंस ना बनाया हो. ओके, बट वी गोना सी another thing that is widely used. Okay, that is the apply one. Okay, it is basically the same as let,
but it returns a value and gives us the context of the object. Rather than object, it gives us the context of the object, the reference. Okay, तो इसको अभी के लिए थोड़ा ऐसे कर देते हैं. हाँ, so let's say ये कंडीशन है. ओके, ये कंडीशन है. ओके, now I wanted to use, like, now my condition is कि I wanted to initialize this person object with some values, right? So what I'm gonna do, I'm gonna do person dot apply. Okay, अच्छा, this is a nullable type. Okay, इसको और क्लैरिटी के लिए अपन ऐसे कर देते हैं. ओके, हाँ, so I wanted to uh, let me see if we can do this. Okay, now I wanna do apply on this. Okay, now अब होगा क्या, जैसे आप देख सकते हो कि rather than giving us of the type int, now it gives us the type this. Okay, now अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, right, it give me an error कि no, generally you cannot do this, you can always, you have to use this parameter. Okay, so what I can do, I can do this dot name equal to Niket. Okay, I can do this dot age equal to 23. Okay, and I'm able to uh, I'm able to initialize this object. Okay, and I will then calling this print statement to see if the properties has been set up, right? So yes, you can see the person detail. I have been setting this using the apply scope function, right? But the great part is key, because this is returning the reference to this person and we are just inside the scope of this object. What we can do, I can emit writing this and this again. Okay, so अगर मान लो मेरे को इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल करना है rather than calling it here, जैसे मैंने यहाँ पे person dot gift कर person dot method name कॉल किया हुआ है, I can similarly do that using here without using this person uh, object. Okay, without using this person object, I can do inside this apply uh, uh, scope function, right? तो इससे हमने दो चीज ये सीखी कि लेट में क्या होता था, the object was the operation was been happening on the object, इसलिए हमें it dot name करना पड़ता था, right? But because we are using apply, it generally returns us the person. Okay, and because मैं reference में कर रहा हूँ object के, so I just don't need to write this keyword again and again. The compiler is smart enough that it know कि हाँ name property अगर pop up हो रही है तो it is in the context of this person object, right? uh, am I able to explain the little context of let and apply कि कैसे यूज करते हैं? I am aware about Harsh and Raj. What about Vishesh, Bhavyansh, Antar? Are we able to get it? मतलब कहाँ let इस्तेमाल करना है, कहाँ apply इस्तेमाल करना है? Cool, cool. Okay, so generally हम अप्लाई तब इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे when we will be doing configuration of very heavy objects.
okay, then we will be doing it using apply. okay, तो जैसे मेरे को बार बार मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे को पर्सन डॉट नेम करूँ, ओके, फिर उसमें प्रॉपर्टी सेट करूँ, फिर पर्सन डॉट एज करूँ, फिर उसमें प्रॉपर्टी सेट करूँ, ठीक है, फिर पर्सन डॉट कुछ फंक्शन कॉल करूँ, राइट, just to avoid those things I can do inside this using the apply keyword, right? So this is one of the benefit of using scope functions. Okay, it help it help us to make our code so concise, right? आपको इसको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ भाई, पर्सन ऑब्जेक्ट लिया मैंने इनिशियली, इसमें कुछ वैल्यूज नहीं थी, ओके, इसमें मैंने इनिशियली कुछ वैल्यूज नहीं दी थी, बट मैंने बाद में अप्लाई यूज किया एंड आई प्रोवाइडेड सम वैल्यूज एंड व्हेन आई ट्राई टू प्रिंट इट आई वाज एबल टू get the value, right? Now uh, when to use let, when to use apply, it will get clear with more writing of Kotlin, but in general, in my experience, I generally use let to check, to do null checks and do operation on the object, okay, uh, and I use apply generally to to initialize the object, okay. So when we will be building some heavy objects, like जब हम database का object बनाएंगे, जब हम HTTP client का object बनाएंगे, then we will see those functions uh, uh, real use case, okay. But ये let का use case आप UI layer में generally देखोगे, okay. Now we come to the other part, okay. This is very rarely used, okay. uh, Also, like the name of the function is also, I'll showcase how it can be get called, okay. So मान लो मेरे को कुछ ऐसा नहीं करना है, I wanted to do build string, okay, and I wanted to beautify my output, okay. So person name is this, okay, and I just add some space here, okay, and like this, okay. अब आपने देखा था कि पहले मेरे को प्रिंट स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहा था टू शो द आउटपुट, राइट। अब मान लो कि मेरे को ये नहीं करना है, मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ हो जाए और जैसे ये हो उसके बाद कुछ और चीज़ हो, ओके, लाइक जैसे इन एग्जांपल प्रिंट हो, तो व्हाट आई कैन डू दिस also, okay, like you can see it is showing me it type, okay. Basically build string हमें string return करता है, so you can see it is returning us the it, the parameter is giving us the it type. So what can I do? I can just do print ln and I'll just do it, okay. Now if I run this again, okay. Oh, my bad, okay. If I run this again, you can see uh, the print statement is getting called, okay, but I've used whatever is getting returned from this complete build string builder, this string builder, right. I've taken this value and I'm printing. Generally the use case of also is, in my experience, I generally use it for debugging process, for making uh, analytic calls to my server, okay, for printing out stuff and for doing very minimal operations, okay, that is not that very vital. जैसे मेरे को कुछ डिबग करने की चल रहा है कि नहीं, क्या वैल्यू आ रही है, जनरली यूज दिस आल्सो ऑब्जेक्ट, दिस आल्सो फंक्शन। नहीं तो जनरली लोग क्या करते हैं,
आपको इसको प्रिंट कराना होगा तो आपको पहले वेल इट इज इक्वल टू में लेना होगा। ओके, फिर आपको प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, राइट। प्रिंट स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, फिर आपको इट को प्रिंट करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट असाइनिंग अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, मैंने क्या किया भाई, तू ये मत कर, तू तेरे को अगर प्रिंट ही करना है ना, तो तू इस चीज को ले और ऑल्सो यूज कर और इसमें प्रिंट कर दे। तो इससे देखो चीजें क्या कंसाइज हो गई, आपको वेरिएबल नहीं बनाना पड़ा, राइट। एंड इफ यू वांटेड to do something very quick, you can just do it using the also scope function, right? So see that the whole concept of Kotlin is to minimize the boilerplate code things that we used to do, right? कितना simple है, just if I wanted to do certain operation, I can just use those very helper scope function, right? So you can see कि इनके एग्जाम्पल में मैंने म्यूटेबल लिस्ट लिया, उसने आइटम को प्रिंट किया एंड एट द एंड उसने इस चीज में 4 भी ऐड कर दिया, राइट। दिस इज कॉल्ड द चेनिंग ऑफ मेथड्स। जनरली वी डोंट डू दैट, बट इट इज टू रिप्रेजेंट कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, कूल। Now, these two remaining scope functions are generally not very widely used. Okay, in Android development, like very rarely used. Okay, generally those two functions work with the non-nullable part. Okay, for example, uh, uh, it can get how can I show it? Okay, जैसे just to uh, represent it, I'll see the example of this. Okay, मैंने एक सर्विस बनाई, ओके, मल्टीपोर्ट सर्विस, ओके, मैंने इसको कुछ कुछ वैल्यूज दी, ओके। नाउ if I see the output, okay, you can see the both the same functionality can be achieved using two different kind of scope function, right? But while using let, you have to use this object and do the stuff, okay। And the other part is कि जब run function हम call करते हैं ना, तो generally this thing get returned, okay, at the end of this thing, okay। And generally run is being used with the non null values, okay। So लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मान लो आप अपने एंड्रॉयड ऐप के थीम में, ओके, आप अपने एंड्रॉयड ऐप के थीम में मान लो आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करना चाह रहे हो एंड यू नो द कलर स्कीम विल नॉट बी एन non nullable value, right? Then you can use this on that, okay। uh, One second, I think the syntax was like this only। अच्छा वो with का है, okay। You can do this, okay, and you can do various operation on this color scheme, right? So uh, so I can set dark theme is equal to false, okay, something like that I can do on this color scheme. Generally it is done on the non-nullable object when you wanted to execute the last item out of your uh, scope, out of this function, okay। So the problem with the scope functions is na, the output that you can achieve using scope function can be similar using two different scope functions, but the difference is so minor that generally it get very hard to understand.
understand. Okay, but what I will recommend you all कि आप generally try to understand how to use let, with, and periodically also. Okay, sorry, let, apply, and also. Okay, generally using run and with will be very particular cases when you know whatever you are doing, but in most of the project building we will gonna use this and this. Okay, so with the run, it is similar to the let function. Okay, but help us to execute some code inside it. Okay, which is also can be done in it, but again the difference you will see when we will be building some our objects, very complex objects. Okay, like the thing I'm not able to represent is कि मेरे को वो ऑब्जेक्ट मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, which will take lot of time to understand, but within the time you will see the use case of it, and we will see it how it can be used. Okay, now generally the with time of scope function also returns as a value and gives the reference to this object, and generally uh, work with the non nullable. Okay, जैसे आप देख सकते हैं mutable list is a non nullable. I can do operation on this numbers object using the with context, and I can call on this specific properties of this uh, object using this uh, code of block, right? So if I execute it, you can see which is called with argument 1 2 3. इसमें मैंने this को print किया है, तो this is referring to this array of items, so this get printed, and मैंने मेरे को यहाँ पे this dot size करने की जरूरत नहीं पड़ी, because it is referring to this object only. मैंने यहाँ पे size लिखा है, and it is able to give me this output कि the size of this mutable list is 3, right? So I'll give you and summarize. uh, I have kept it handy with me, just a second. Okay, so uh, when we use let, जब हमारे पास एक हमें पता है कि ऑब्जेक्ट नल होगा एंड उसमें मैं ऑपरेशन करना चाहता हूँ, बट मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार इफ चेक लगाते रहूँ, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लेट लगाऊंगा एंड आई विल स्टार्ट यूजिंग द ऑब्जेक्ट। ओके, इनसाइड अप्लाई हमने जैसे देखा था, अप्लाई जनरली यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ओके, with these properties and do certain operations on that while initializing. Okay, so आप देख सकते हो मैंने person dot give person some detail नहीं भी कॉल किया था, तब भी ये चीज प्रिंट हो गई थी, right? Because of this apply word, right? So apply is generally used to configure an object. Okay, हमने फिर देखा था also. Also is typically used as to logging and debugging, right? जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि मेरे को एक नया वेरिएबल नहीं बना के फिर उसको प्रिंट स्टेटमेंट में डाल के फिर मैं चेक करूं, आई कैन ऑलवेज यूज this also function and I can use that object to do some certain logging or debugging, right? हमने देखा था कि जनरली रन are been used in configuration when you wanted to set up themes or you wanted to execute some code inside it. Okay, you generally use the run, but it is rarely used. Okay, uh, in our use cases it is rarely used. Okay, जनरली हमारा सारा काम इस अप्लाई, लेट और इस ऑल्सो से हो जाता है। टू बी वेरी स्पेसिफिक, इस दो चीज से आपका सारा काम हो जाना चाहिए। ओके, दिस इज सम जस्ट वेरी टिपिकल वे व्हेन टू यूज दिस थिंग। ओके, जब आप चाहते हो कि
आप अप्लाई टाइप का चीज यूज करना चाहते हो ओनली ऑन द नॉर्मल ऑब्जेक्ट, देन यू कैन यूज दिस विथ पैरामीटर। ओके, बट इफ आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, ओके, आई विल रेकमेंड कि, क्योंकि मैंने आपको ये चीज का फंक्शनैलिटी कैसे हो गया समझा दिया है, आई विल रिकमेंड टू रीड अबाउट व्हाट इज दिस कीवर्ड एंड व्हाट इज इट कीवर्ड। तो while doing that and while going through some more properties of scope function, you will understand it better कि कहाँ पे क्या चीज इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, so there is a handy graph of this as well, but uh, don't get overwhelmed if it is not getting sense right now, because this thing is particularly very new to our programming concept। हम लोग जनरली वेरिएबल्स बना के इफ चेक लगा के चीजें करते थे। दिस इज सम न्यू वेज ऑफ राइटिंग कोड एंड some Kotlin ways of writing code। Okay, the whole idea is to increase the code readability and avoid code duplication। आप चाहो तो आपके पूरे प्रोजेक्ट में बिना इन सब चीज़ों को यूज करके भी आप वैलिड कोड लिख सकते हो। ओके, तो इट इज जस्ट वेज ऑफ राइटिंग रीडेबल कोड इन अवर कोड बेस। ओके, ओके, लेट मी नो, क्या हमें लेट समझ में आया कि लेट कब इस्तेमाल करना है? करेक्ट। See, the problem with this scope function is it is very easily it can be misused. Okay, that's why I'm not going very depth into it, as it will lead to the complication। Generally, the reason I showed you the example of let and apply is because ये दोनों चीज ही आप मेजरली यूज करोगे। एंड जब आपको फंक्शन, रिटर्न टाइप, दिस एंड जेनरिक्स का थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, then you can see the real use case of with and run। Okay, as Harsh is saying, I used to use also scope function to start an activity। Is it a wrong way to do because I used to feel comfortable in passing it? uh no, no Harsh, like generally on click listener may also is commonly used, so it is not in a wrong way। uh, it's doable, we can do that। Okay, cool। uh, what about other Bhavyansh, Onkar, Tulika, are we able to get the gist of what is scope functions and what it help us to achieve? Bhavyansh, cool। Okay, cool। सो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन कि हम कैसे स्कोप फंक्शंस, मतलब दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू गिव यू एन जिस्ट की स्कोप फंक्शन एग्जिस्ट एंड हाउ वी कैन यूज इट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कौन कौन से स्कोप फंक्शन है डेट वी यूज वाइडली इन अवर एप। ओके, so those are let, for the non null check, apply to configure an object। okay, generally आप इन दो का ध्यान रखो for a time being, and with time you will learn कि with also and run को हम कहाँ use कर सकते हैं। okay, now coming to the Android part, बहुत हो गया Kotlin। Will learn the basics of Android right now। okay, uh, so I'll just uh, close this part। okay, just a second। okay, we will come back to the Android Studio। okay, now uh, give me a second। actually there are so many ways, so many things that I wanted to share, but I'm not quite sure कि कहाँ से चालू करें। एक second। okay, let's take some whiteboard with us। okay, so generally
uh, is my whiteboard visible? Cool. So generally प्रोग्रामिंग में होता क्या है, एवरीथिंग गॉटन अ लाइफ साइकिल. लाइफ साइकिल इज समथिंग लाइक कि कब चालू हुआ था, ओके, कब एग्जीक्यूट होना चालू हो गया, कब उसने स्टार्ट करना काम चालू कर दिया, कब एंड हो गया, ओके, एंड कब फिर से स्टार्ट हुआ, ओके. जनरली ये लाइफ साइकिल जैसे कि वी ह्यूमंस, ओके, वी टेक बर्थ, वी डू सम ग्रेट थिंग्स इन अवर लाइफ एंड वी डाई, ओके. सो जैसे हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है, जनरली एंड्रॉयड में हर ऐप का एक लाइफ साइकिल होता है, ओके. टू बी वेरी प्रिसाइज, हर एक एक्टिविटी का लाइफ साइकिल होता है, ओके. नाउ activity is one of the component, okay, one of the component of android. With this help we generally launch और we generally enters to an application, okay. तो मान लो ये आपका लॉगिन पेज है, ये डूइंग स्टफ, बेस्ड ऑन दिस एक्टिविटी कॉन्फ़िगरेशन यू बेसिकली लॉन्च एन ऐप, ओके. नाउ जैसे एंड्रॉयड में टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं, एक्टिविटी इज वन ऑफ देम, एंड जो बाकी की 3 होते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हेल्प अस टू लॉन्च एन एक्टिविटी और लॉन्च एन ऐप फॉर अस, ओके. So we don't have to go through all of that, okay. We will just focus on activity, okay. Okay. अब जैसे कि हमारा एंड्रॉयड ऐप रहता है, ओके. जनरली हम क्या करते हैं एंड्रॉयड ऐप में, चीज़ों को हम मिनिमाइज करते हैं, चीज़ों को हम टू डू मतलब बैकग्राउंड में डालते हैं, राइट. या हम अपने ऐप को स्क्रॉल अप करके अपनी स्टैक से डिलीट कर देते हैं, राइट. जैसे आप लोग एंड्रॉयड ऐप चलाए होगे, तो जनरली थ्रू आउट द डे व्हाट यू डू वेरियस एक्टिविटीज ऑन योर एप्लीकेशन, राइट. आप किसी बटन को दबा रहे हो, आप ऐप चालू कर रहे हो, ऐप बंद कर रहे हो, राइट. आप जैसे म्यूजिक सुन रहे हो, आपको कॉल आ जाता है तो आपका म्यूजिक थोड़े टाइम के लिए स्टॉप हो जाता है जब तक कॉल चल रही है, right. So this all kind of stuff that happens is considered one of the activities over an app, okay. So in order to track that, Android team have built a class called component activity, okay. So uh, this is the source code, okay. So generally they have created an activity, okay, जिसमें we can do lots and stuff, okay. अच्छा, याद है हम पिछली क्लास में एब्स्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, इंटरफेस पढ़ रहे थे, राइट. हमारे सर से थोड़ा सा ऊपर से जा रहा था कि चीजें क्या होती है, कैसे होती है, राइट. नाउ you can see the real use case of those oops concept throughout your Android journey, right. तो Android टीम वालों ने एक एक्टिविटी बनाई, ओके, उसको एक दूसरी क्लास से एक्सटेंड किया, ओके, एंड उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐड करनी थी जो कि रिक्वायरमेंट है, तो उन्होंने इसको इंटरफेस के थ्रू कर दिया, राइट. अब मैं जब इस एक्टिविटी को एक्सटेंड कर रहा हूँ, ओके, मेन एक्टिविटी तो सिर्फ नाम है क्लास का, बट मेन काम तो ये कंपोनेंट एक्टिविटी कर रहा है, राइट. जब मैं इस चीज को एक्सटेंड कर रहा हूँ तो आपने देखा था हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखे थे, हमें ऑन हमने मेथड को ओवरराइड किया था, राइट. यू कैन सी द ओवरराइड कीवर्ड हियर. हमने सुपर कीवर्ड के बारे में पढ़ा था, राइट. सो this is the real use case of oops concept, real use case of the oops concept, okay. So with time you will understand कि चीजें हो क्या रही है and how we generally design our software, okay. So I was talking about activities, okay. Now generally these activities help us to track the behavior whatever it is happening, okay, and
at each activity we getting call back. Okay, so जब आपका will see through an example. Okay, ये आपका एंड्रॉयड डिवाइस है. ओके, इट इज रनिंग एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन इट. ओके, अब मैं जब भी कुछ चीज इसमें क्लिक करता हूँ, ओके, क्लॉक, तो विद इन दिस टाइम सर्टेन थिंग्स गेट हैपन. ओके, वो इतना तेज होता है कि हमें समझ में नहीं आता. सर्टेन थिंग हैपन, सर्टेन initialization happen, and based on that various inputs that I gave, I inflate different kind of UI over the screen. Okay, तो इन सब सारी चीजों में कुछ कुछ मेन ऐसे मेथड्स होते हैं that we wanted to keep track of to avoid our app got crash. Okay, so we'll see through this documentation. Okay, uh, generally मान लो if you are going with the Android career. Okay, uh, if you're taking Android development as your career, there can be an interview. Okay, इंटरव्यू जिसमें कंप्लीटली आगे वाला बंदा आपको एक्टिविटी के बारे में पूछेगा एंड यू विल लर्न ऑलवेज अ न्यू थिंग ऑन इट. ओके, जनरली आप इसको कितना भी पढ़ लो, आपको हमेशा नया चीज ही इसमें सीखने को मिलेगा. ओके, बट we just gonna focus on the very basic thing is generally this activity life cycle. Okay, so जैसे as a human get born and die, similarly our activity get started and get end. Okay, so when we define a main activity which is a driver class, which generally starts the Android app. Okay, ये कहीं ना कहीं defined है. Okay, so if I see the implementation of it, it is been defined in the Android manifest. Okay, तो जब भी एक ऐप रन होता है, ओके, मान लो इस ऐप को मैं रन करता हूँ, जब भी दिस ऐप गेट रन, this Android manifest uh, get executed in the OS level. और जब सब कुछ सही होता है, ओके, इट एग्जीक्यूट दिस एक्टिविटी. ओके, तो आप देख सकते हो एक्टिविटी का टैग है, हियर वी हैव डिफाइंड द एक्टिविटी. ओके, नाउ जैसे कि इस ऐप में आप देख सकते हो अभी ये विजिबल स्टेट में, राइट, आप देख सकते हो कि अभी इट इज जनरली इन द बैकग्राउंड स्टेट. आप देख सकते हो जनरली इट इज अगेन इन द बैकग्राउंड बट इट इज नॉट विजिबल. ओके, तो ये जितनी भी सारी चीज होती है ना, यू कैन कीप ट्रैक ऑफ इट यूजिंग सम हैंडी कॉल बैक्स. ओके, वी जनरली कॉल इट app life cycle callbacks. Okay, so we gonna see it in the action just right now. Okay, so जब एक्टिविटी मैं इसमें लॉन्च करता हूँ, ओके, जस्ट अ सेकेंड, जब मैं इसमें एक्टिविटी लॉन्च करता हूँ, ओके, विद इन दिस टाइम, ओके, जब मैंने एक्टिविटी लॉन्च किया, दिस ऑन क्रिएट मेथड गेट कॉल्ड, दिस ऑन स्टार्ट मेथड गेट कॉल्ड, दिस ऑन रिज्यूम मेथड गेट कॉल्ड, एंड देन ओनली आई एम एबल टू सी द एक्टिविटी रनिंग. ओके, नाउ मैं इसको जब इस स्टेट में लेके जाता हूँ, ओके, जनरली द एक्टिविटी कम्स टू द ऑन पॉज स्टेट. ओके, एंड देन कम्स टू द ऑन स्टॉप स्टेट. ओके, अब मान लो कि हुआ क्या कि आपने बहुत सारे ऐप खोल दिए, आपने ये खोल दिया, ठीक है, आपने प्ले स्टोर खोल दिया, ओके, आपने फाइल्स खोल दिया, ओके, आपने दुनिया भर के ऐप अपने जितने भी थे मोबाइल फोन में सारे खोल दिए आपने. ओके, अब होगा क्या, मान लो आपने इतने सारे ऐप ऑन है, ओके, और आपने पबजी चला दिया. ओके, होगा क्या, पबजी को क्योंकि बहुत मेमोरी लगती है चालू होने में, वो क्या करेगा, अगर उसके पास मेमोरी नहीं होगी ना, तो धीरे धीरे उन सारे ऐप को ऑटोमेटिक बंद करने लग जाएगा. ओके, so this whole thing that whatever we are seeing here and other methods are generally being controlled by the operating system. Okay,
सो कोई आपसे बोले कि एंड्रॉइड डेवलपमेंट हलवा है, डोंट टेक इट them very seriously. Android development is a very complex stuff. Okay, we are generally not building apps, we are generally dealing with the operating system in general. Okay, so always take care of that. Okay, so now we gonna see these things in working. Okay, so what we have to take care, we have to take care of this 1 2 3 4 5 6 and 7 methods. Okay, so if I try to populate them, okay, on create being the most important one, जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई ऑन क्रिएट एंड ऑन रिज्यूम्स आर डिफरेंट, तो आप उसमें आंसर दोगे कि जनरली ऑन क्रिएट वी हैव दिस हैंडी मेथड सेट कंटेंट, जिसमें जनरली आप ना अपना यूआई को इन्फ्लेट करते हो. ओके, so that is for the other case. मैं आपको दूसरे मेथड्स इन्फ्लेट दूसरे मेथड कॉल करके दिखाऊंगा. ओके, so you can see this methods being getting coming. Okay, so I will call on क्या था, on start. Okay, I will do simple print ln and I will do on start. Okay, just to represent कि ये कॉल हुआ था. Okay, I will gonna in call this on resume method. Okay, rather than doing this I will do this. Okay, and I will call it on resume. Okay, now what was the third one, on pause. Okay, so generally it, मैं जिस ऑर्डर में लिख रहा हूँ जनरली इट एग्जीक्यूट इन दिस ऑर्डर ओनली, जब ऐप बॉर्न होता है एंड व्हेन द ऐप गॉट किल्ड. ओके, now the other one was on stop. Okay, so print ln and on stop. The other one was on restart. Okay, I will gonna print some details here as well, not like this, like this. Okay, on destroy finally. Okay, now we gonna see them executing one by one in our logcat. Okay, in our logcat we gonna see it executing. Okay, generally system.out is a filtration जिससे हमें सिर्फ अपने print statement दिखेंगे. Okay, so I'll take this one, I'll do I'll run this app. Okay, okay, coming to my logcat. अच्छा, आई डिड वन थिंग, मैंने ऑन क्रिएट में कॉल नहीं किया. जस्ट अ सेकेंड. ओके, I'll gonna delete it now and I'm gonna run it again. Okay, so I'm gonna go to the logcat. Okay, then you can see the on create method is being called at the last. Okay, on start get called, on resume get called. Okay, now आप लोग सोचोगे यार ये तो थोड़ा सा गलत हो रहा है, पहले तो ऑन क्रिएट कॉल होना था, फिर ऑन स्टार्ट होना था, ऑन रिज्यूम होना था, राइट. सो वन मिस्टेक व्हाट आई डिड, मैंने इसको सेट कंटेंट में कॉल कर दिया, तो जब ये चीज एग्जीक्यूट हुई तभी ये कॉल हुआ. ओके, so if I put it over here, okay, not like this, like this. Okay, and I tried it again. Okay,
यू कैन सी ऐप चालू होने से पहले ऑन क्रिएट स्टार्ट हुआ, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, एंड देन ऑन रिज्यूम कॉल हुआ, राइट? इफ आई मिनिमाइज द ऐप, ओके, if I minimize the app, okay, you can see on post कॉल हुआ, देन ऑन स्टॉप कॉल हुआ, राइट? अगर मैं इसको क्लियर कर दूं, ओके, एंड अपने स्टैक में से मैं इसको वापस चालू करूं, तो यू कैन सी ऑन रीस्टार्ट फिर से कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ, ऑन रिज्यूम कॉल हुआ। बट इसमें कैच है। कैन एनीवन गेस कि क्या कैच है? कौन सा एक मेथड था जो कॉल होना था बट नहीं हुआ? Sir, on create. Why on create? Because the views were created at first. करेक्ट, करेक्ट। जनरली इससे हमने एक चीज ये सीखी कि जब हमारा ऐप बैकग्राउंड में था, राइट, तो मेमोरी उसने ऑलरेडी ले रखी है। दिस ऑन क्रिएट इज बीइंग कॉल्ड ऑलरेडी, ओके, ये मेमोरी में अभी ऑलरेडी है, ओके। तो जब मैं इसको वापस वापस से इसको विजिबल स्टेट में आता हूँ, राइट, तो रेदर देन कॉलिंग ऑन क्रिएट अगेन, ये जनरली इन दो स्टेट को कॉल करता है, ओके, एंड वी गेट दिस आउटपुट, ओके। एंड मैंने इसको ऑन पॉज में किया, नाउ द ऐप इज completely आउट ऑफ विजिबल, सो वी आर गेटिंग ऑन स्टॉप मेथड कि नई एक्टिविटीज अब इस ऐप की पूरी रुक गई है, वी कैन नॉट डू दैट, ओके। एंड इफ आई ट्राई टू क्लियर माई स्टैक, ओके, मेरे को शायद ऐसे करना था, ओके। सो व्हेन आई क्लियर द ऐप, generally the on destroy method will be get called, okay, and the app memory will be released from the will be released by the operating system, okay. Now you might be thinking कि कितना simple है, right? But there are many edge cases, जैसे there can be a possibilities कि आपका on destroy कॉल ही ना हो, okay, even the app gets killed, okay. There can be a use case कि on pause कभी कभी काम ना करे, okay, as you expected, okay. There can be use case कि आपका ऐप बहुत टाइम तक मेमोरी में and it get killed by the operating system, okay. एंड देयर कैन बी यूज केस कि अचानक से आपका पूरा ऐप ऑन रिस्टार्ट में कॉल हो गया, राइट? सो जनरली जब हम लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट पढ़ते हैं, ओके, वी जनरली टेल द डेवलपर्स अबाउट द एक्टिविटी लाइफ साइकिल इन द वेरी बिगिनिंग, क्योंकि द बेटर यू अंडरस्टैंड दिस, द बेटर यू विल मेक योर ऐप क्रैशलेस, ओके। जैसे मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपने ऑन क्रिएट में सारा इनिशियलाइजेशन कर दिया, ओके। मैं अभी एग्जांपल ले लेता हूँ। म्यूजिक प्लेयर आपने ऑन कर दिया, ओके। मेरे पास अभी इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, बट ट्राई टू टेक एज एनालॉजी कि म्यूजिक प्लेयर है, आपने ऑन कर दिया। जैसी जैसी यूआई यूजर के इंटरेक्शन पार्ट में आ जाती है, तो जनरली दिस ऑन रिज्यूम गेट कॉल्ड, ओके। एंड आपने विल मेक इट वार, ओके। मान लो आपके उसमें आ जाती है एंड यू अच्छा, मैंने ऑन क्रिएट में कॉल किया हुआ ना, ओके, ओके। तो जैसी वो उसमें आ जाती है, मतलब इंटरेक्शन स्टेट में आ जाती है, देन आई टर्न द म्यूजिक प्लेयर ऑन, ओके। अब मान लो दिस म्यूजिक प्लेयर वाज टेकिंग सम मेमोरी फ्रॉम द आउटसाइड फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने क्या किया, आपने ऑल ऑफ द सडन इस चीज को, म्यूजिक प्लेयर को यहाँ पे मतलब बंद नहीं किया और आपने ऐप को डिलीट कर दिया, मतलब आपने ऐप को क्लियर कर दिया। तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज कि अपने ना ऑपरेटिंग सिस्टम में देयर कैन बी सम रेफरेंस बीन होल्ड, जिसके कारण ना मेमोरी लीक्स हो सकती है, राइट? एंड जिसके कारण देयर कैन बी वेज कि अपना मेमोरी जबरदस्ती ही भर रहा हो, राइट?
So it is very vital to understand about those life cycle method and handle very curious very crucial uh, operations based on the app life cycle. Okay, अगर आप ये नहीं करते हो, it can leads to memory leaks. Okay, and generally it's not a good thing to have a memory leak through your app. Okay, जैसे मैं आपको सबसे बढ़िया एक एग्जांपल देता हूँ. ट्राई टू डू विथ योर फ्रेंड. ओके, हम सभी के पास व्हाट्सएप है, राइट? ओके, सो आप करना क्या, आप अपने दोस्त को बोलना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल हर्ष का एग्जांपल लेता हूँ. मैं हर्ष को बोलूंगा, यार हर्ष, मैंने तेरी चैट खोल रखी है. ओके, तू अपना ऐप ऑन कर व्हाट्सएप का. तो आप देखते होगे कि जैसी हर्ष अपना ऐप को ऑन करेगा ना, तो जनरली उसके चैट में ऑनलाइन यहाँ पे दिखने लगेगा, राइट? ऑनलाइन दिखने लगेगा दैट कि हर्ष इज ऑनलाइन ऑन द व्हाट्सएप. बट आप अपने दोस्त को बोलना कि यार ठीक है, आई एम एबल टू सी द ऑनलाइन स्टेटस ऑफ यू. नाउ ट्राई टू मेक योर ऐप इन द ऑन पॉज स्टेट. ओके, तो जैसे ही वो ऑन पॉज और ऑन स्टॉप कॉल होगा, व्हाट्सएप वाले क्या करते हैं, ऑनलाइन वाला जो बुलियन रहता है उसको फॉल्स कर देते हैं. करेक्ट, क्योंकि द यूजर इज इनफैक्ट नॉट इंटरेक्टिंग विद द ऐप. यूजर के मेमोरी में भले ये ऐप चल रहा है, बट वो अभी ऑफलाइन है, राइट? इट इज नॉट एबल, इफ द यूजर इज नॉट करेंटली इंटरेक्टिंग विद द व्हाट्सएप. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द यूज केस ऑफ द ऐप लाइफ साइकिल, कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनीज यूज इट टू शोकेस यू different features or different states of the app to you. Okay, uh, now इसमें हम पढ़ते जाएंगे, तो यू यू माइट कम टू दिस ब्लॉग विच विल टेल यू अबाउट कि कैसे ऐप लाइफ साइकिल इफ बिन हैंडल प्रॉपरली will help you to make your app crash free, memory to avoid memory leaks. Okay, okay, and provide a good user experience to your users. Okay, so that was an overview. मैं चाहूँ तो ऐप एक्टिविटी लाइफ साइकिल के बारे में 2-3 क्लास ले सकते हैं हम इसके बारे में, बट it is not an ideal way of teaching activity life cycle now. The point was to give you an overview कि जब एक ऐप बनता है, ओके, और उसके अंदर क्या क्या स्टेट्स होती है that we have control. ओके, so let me know, क्या हमें ये बेसिक ऐप लाइफ साइकिल समझ में आया? क्या हमने लॉग्स के थ्रू समझा कि कौन कौन से टाइम पे कौन कौन से स्टेट्स कॉल होते हैं? आर वी लर्न समथिंग न्यू? मतलब हम एंड्रॉयड इतने सालों से चला रहे हैं, क्या हमें कुछ नया सीखने मिला कि भाई व्हाट्सएप का ऑनलाइन कैसे काम करता होगा? म्यूजिक प्लेयर क्यों बंद हो जाती हैं जब एक कॉल आती है? ओके, ऐसा क्या होता है कि मैं जब स्क्रीन को रोटेट करता हूँ तो चीज़ें मेरे को थोड़ा सा ग्लिच दिखता है? ऐसे आप डिफरेंट यूज केसेस ना आपको पता चलेंगे. ओके, so I'm sharing this links with you. I will encourage you all to give it a read. Okay, आपको इसमें बहुत सारी चीज पता चलेगी जो मैंने मे बी कवर नहीं की हो. ओके, बट आप इन सब चीजों को पढ़ोगे ना, तो व्हेन यू विल बी बिल्डिंग एन ऐप, आपको एक ओवरव्यू होगा कि हाँ भाई कहाँ पे क्या चीजें करनी है. ओके, सो गिव इट अ रीड, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट. ओके, एंड मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा. आपको करना क्या है, आपके पास एक एक्टिविटी, मेन एक्टिविटी तो ऑलरेडी बनी हुई है, राइट? आपकी मेन एक्टिविटी ऑलरेडी बनी हुई है बाय डिफॉल्ट. आपको एक एक्टिविटी बनानी है. ओके, ओके, एक्टिविटी बनानी है, एंड यू कैन कॉल इट एनीथिंग लाइक सेकेंड एक्टिविटी, यू कैन कॉल इट सेकेंड एक्टिविटी. ओके, और जब आप इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में नेविगेट करोगे, ओके, एंड इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में नेविगेट करोगे, तो आपको दोनों एक्टिविटी के ऐप लाइफ साइकिल के बारे में
लॉग 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 करना है उसको, मतलब जैसे हमने प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट किया था ना कि दिस मेथड गेट कॉल्ड, वैसे आपको लॉग करना है और मेरे को बिहेवियर बताना है कि ये कैसे हुआ। ओके, इस एक्टिविटी से आप ये सीखोगे कि एक दिस असाइनमेंट से आप ये सीखोगे कि एक एक्टिविटी कैसे बनाते हैं, एंड हाउ यू कैन जनरली नेविगेट फ्रॉम वन एक्टिविटी एंड कम बैक टू द अनदर। ओके, ये चीज करने में देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज कि आपको थोड़ा टाइम लगे। ओके, तो बी पेशेंट, गिव इट अ ट्राई। ओके, एंड लेट मी नो इफ वी आर एबल टू सक्सेसफुली एबल टू अचीव इट। ओके, कूल। आप एक्टिविटी एक जब नई बनाओगे तो देयर कैन बी पॉसिबिलिटीज कि आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस दिखे। ओके, तो डोंट गेट स्केर्ड अबाउट इट। इफ नीडेड आप एक यूट्यूब वीडियो भी देख सकते हो। ओके, बट गिव इट अ ट्राई। ओके, get your hands dirty on those activities. Okay, whew. I think we understood the basics of activity. Okay, uh, I honestly don't remember कि जब मैं इसको पहली बार पढ़ा था तो मेरे को समझ में आया था कि नहीं आया था, बिकॉज मैंने ये टॉपिक्स बार बार देखे थे। आई वॉज वेरी क्यूरियस एंड आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड इट। ओके, तो अगर आपके साथ ऐसा केस है कि इफ यू आर नॉट गेटिंग द फुल कॉन्टेक्स्ट कि क्या हुआ, आई विल हाईली एनकरेज टू गिव इट अ ट्राई, जो मैंने अभी किया। गिव इट अ ट्राई एंड डू सम वेरियस थिंग्स एंड ट्राई टू ऑब्जर्व द स्टेट। ओके, जनरली हमारे कोर्स में हम ऑन क्रिएट एंड ऑन डिस्ट्रॉय में काम करेंगे, बट we can see some we can see some use case of those three as well. Okay, एंड हाँ, अगर आप किसी एंड्रॉयड इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो दिस इज एन मस्ट थिंग, इसको आप पूरा पढ़ के जाना। ओके, so that was the pretty much it about the activity life cycle. Okay, uh, now we gonna learn about Jetpack Compose. Okay, so I'll showcase you what is Jetpack Compose. Okay, तो जनरली जितना भी uh, जितना भी हम लोग यूआई देखते हैं ना हमारे ऐप में, जैसे कि वो कार्ड व्यू हो गया हो। ओके, कार्ड व्यू में कुछ इमेज हो गई हो। ओके, इमेज के साथ कुछ टेक्स्ट हो गया हो, टेक्स्ट के साथ कुछ बटन हो गया हो। ओके, यहाँ पे कुछ शेयरिंग का ऑप्शन हो गया हो, इसके साथ यहाँ पे नीचे और कार्ड हो। ओके, whatever the UI you see in your Android app nowadays are being built by this Jetpack Compose. Okay, so Jetpack Compose is a very wide thing. We're gonna cover it throughout this week. Okay, but for today we are gonna start with the very basic कि हमें अगर layouts बनाना है। Okay, we have to do something very basic. We're gonna have a look into that. Okay, so generally there are three major composables. Okay, that help us to build Android apps. Okay, बेसिकली विथ दिस थ्री कंपोजेबल आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लेआउट बना सकते हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ ऐसा लेआउट बनाना है, ओके, यू कैन गिव इट अ ट्राई एट योर फ्री टाइम। आपको कुछ ऐसा लेआउट बनाना है कि एक आइटम यहाँ शो, एक आइटम यहाँ शो, एक आइटम यहाँ शो, एक आइटम यहाँ शो, एक आइटम यहाँ शो। ओके, एक आइटम यहाँ हो। आपको अगर इतना भी कॉम्प्लेक्स आपको अगर लेआउट बनाना है तो this is possible with the Jetpack Compose. Okay, so there is no limitation with this new framework that Google have introduced. Okay, so for going with the very advanced level, we just gonna see the few basic things that we gonna use in this week. Okay, and gradually we will be increasing the complexity. Okay, so those three composables are row, column and box. Okay,
आप जनरली एंड्रॉयड में या किसी भी यूआई फ्रेमवर्क में आप जनरली चीजें कैसे देखते हो? जनरली चीज या तो ऐसे होगी, या तो बहुत बहुत गंदी ड्राइंग, या तो ऐसे होगी, बना ही क्यों रहा हूँ मैं, ओके, आई जस्ट गिव इट अ कलर, ओके, या तो ऐसे होगी, ओके, विथ अ वर्टिकल लिस्ट, ओके, या तो आ, या तो आपका कुछ लेआउट ऐसे होगा। अरे बहुत बढ़िया। ब्रिंग ब्रिंग फॉरवर्ड, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा ग्लिच हो गया। नॉट श्योर व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग। इसको डिलीट करते हैं, ओके। या तो आपका लेआउट कुछ ऐसा होगा कि इट गोस वर्टिकली, ओके, या तो आपका कुछ लेआउट ऐसा होगा कि इट गोस हॉरिजॉन्टली, राइट, लाइक दिस ऑर्डर, या तो कुछ ऐसा लेआउट होगा कि आ, कि ऑलरेडी आपके पास हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट्स हो और आपके वर्टिकल्स में भी कंपोनेंट्स हो, राइट। सो दिस ऑल इज पॉसिबल यूजिंग दिस वेरी बेसिक थ्री composable layout builders provided by the Jetpack Compose. Okay, so first one is the column which help us to define things vertically. Okay, so we will see an example. Okay, मान लो I can use this column block. Okay, this column block I can do box. Okay, I will give it a modifier. अच्छा, ये modifier क्या है? Don't stress about it. We gonna see it in a very much detail. Okay, मैं इसको साइज दे देता हूँ, let's say 100 dp. Okay, और मैं इसको uh, अरे, फ्लटर लिखने की आदत हो गई ना, तो थोड़ा सा तो इसको मैं दे देता हूँ कलर, कलर डॉट ब्लू। ओके, नाउ इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ एंड नाउ आई एम गोना क्रिएट थ्री मोर बॉक्सेस। ओके, नाउ इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड, और इसको कलर में दे देता हूँ ब्लैक। ओके, फॉर यूआई कि इजीली हमें ये यूआई में दिखे, मैं थोड़ा सा वाइट स्पेस ऐड कर देता हूँ। ओके, so I'm gonna do this and this. I'm gonna format it. Okay, so if I try to run this app, okay, initially हमें hello android दिखता था, right? Now we'll see the output. Okay, now you can see कि we are able to align three containers in a column fashion, right? This is generally possible with this column block. Okay, now मैं इस चीज को अगर हटा दूं, if now I change it with the row, तो can anybody guess कि output क्या होगा? So it will align horizontally. hmm Correct. So if I do hot restart of this, you can see कि the box is been aligned in a row, right? आप देख सकते हो कि बिकॉज इट्स इन अ रो, आप देख सकते हो कि दिस स्पेसर डजंट गॉट वर्क, राइट, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द हॉरिजॉन्टली इंस्टेड ऑफ हाइट, व्हाट आई एम गोना नीड टू प्रोवाइड द विड्थ, राइट। तो अगर मैं इसको यहाँ प्रोवाइड करूंगा एंड आई ट्राई इट अगेन, यू कैन सी a box of 100 dp in the length,
at each side because it's a square, 100 at each side. Okay, a box of blue is been inflated in the UI with a spacer. Okay, यहाँ पे मैंने कुछ white space add की and I have inflated the other two box. Okay, so generally this only using this very minimal three components आप कोई भी लेआउट बना सकते हो. ओके, सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जैसे मैंने फंक्शन में दो टेक्स्ट को प्रोवाइड किया, तो व्हाट इज हैपनिंग, इट इज ओवरराइडिंग. ओके, बट मैंने जैसे इसको कॉलम दे दिया, इट अंडरस्टूड कि इस एल्फर्ड नाम के बाद मेरे को ये टेक्स्ट को इन्फ्लेट करना है, तो जेटपैक कंपोज इज स्मार्ट इनफ, इट विल पुट इट beside it, right? Now if I wanted to add a photo, and beside this column I can do that. मैंने एक रो बनाई, रो में मैंने कुछ प्रॉपर्टीज सेट की और मैंने उसके अंदर कॉलम इस्तेमाल किया. सो सी, यू सी द मैजिक. नॉट ओनली हम इस चीज को यूज करके बेसिक लेआउट बना सकते हैं, इन इन सबको एक दूसरे के साथ यूज करके हम अपना डिजायर्ड आउटपुट अचीव कर सकते हैं, राइट? बिकॉज दिस लेआउट इज वेरी सिंपल. वी वांट एन इमेज, दिस, अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊं, if I am able to explain it. Okay, so this is an the card. Okay, now this whole thing is a row. Okay, this whole thing is a row. एग्जाम्पल में जो ये इमेज दिखा रही थी, दिस इज एन फर्स्ट आइटम ऑफ द रो. ओके, और यहाँ पे जो आपको डिटेल दिखा रही थी, ओके, दिस होल पार्ट इज द सेकेंड आइटम ऑफ द रो. ओके, but being the second item of the row, this is also a column. Okay, so here we are using two composables to build the card layout, right? You see the magic here. Then the use case of using different layouts altogether. Okay, now box is something, जब आप किसी किसी चीज के ऊपर, ओके, जैसे लेट से आपका ये लेआउट बना हुआ है, ओके, एंड आप चाहते हो कि इसकी चीज इस लेआउट के ऊपर यू वांटेड टू डू स्टफ, यू कैन यूज अ बॉक्स. ओके, तो अगर मैं चाहूँ कि एक बॉक्स हो जिसके अंदर ऐसा नाम हो, आई कैन यूज दिस बॉक्स प्रॉपर्टी. ओके, सो किसी ने स्टैक ओवरफ्लो तो सब सुने होंगे. किसी ने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे किसी ने स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में सुना है, राइट? दैट वी कीप ऑन एडिंग, कीप ऑन एडिंग, कीप ऑन एडिंग. सो बॉक्स इज काइंड ऑफ अ स्टफ. अगर आप बॉक्स लिखते हो, उसके अंदर एक कंपोजेबल देते हो, फिर उसके अंदर एक कंपोजेबल देते हो, फिर उसके एक कंपोजेबल देते हो, तो इट वर्क्स लाइक अ स्टैक. ओके, वेयर एज columns and row works like in linked list, like कि आप, just a second, I'm getting a call. I'm sorry about that. हाँ, so I was talking कि columns help us to represent things in a vertical fashion. I can keep on adding things in a vertical fashion. In the row, I can do it horizontally like this. Okay, and in the box, I can do in a stack manner option, एक के ऊपर एक. Okay, so using these three things, you can build any layout, okay, in Android using this, uh, using Jetpack Compose. Okay, complex से complex layout हम just using these three composable we can achieve it. Okay, so I'm gonna share this link with you as well.
and you can have a look, right? You can see the nesting of composables. रो के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर बॉक्स हो सकता है, बॉक्स के अंदर रो हो सकता है, रो के अंदर कॉलम हो सकता है. इट्स टोटली डिपेंडेबल अपॉन हाउ कॉम्प्लेक्स यूआई यू आर बिल्डिंग. ओके. तो so uh, that was some of arranging things in a vertical row. We can using Kotlin. As you can see, I am using three rows in a column. That's why I am able to see this output in my tablet. Okay. Now, if I use the box, it's a stack approach. मैं जब चाहता हूँ कि एक के ऊपर एक चीज हो, then I can use the box. Okay. So that was pretty much it for today. I hope हमने आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखी होगी. हमने कॉटलिन का एक फीचर सीखा, स्कोप फंक्शन. हमने एंड्रॉयड चालू किया. चालू करते करते हमने थोड़ा सा यूआई भी बनाया, राइट. हमने बहुत कोर चीज एंड्रॉयड लाइफ साइकिल के बारे में सीखा, राइट. नाउ इट्स योर टर्न टू रिवाइज दोस थिंग्स. आई विल बी ड्रॉपिंग एन असाइनमेंट. एक पहला असाइनमेंट तो ये था कि आपको वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी जाना है एंड लाइफ साइकिल मेथड्स को ट्रैक करना है. आई विल बी पोस्टिंग अनदर assignment. It will be related to creating a UI. Okay. It's up to your imagination and your convenience कि आप कैसा बनाना चाहते हो. I will give an assignment and you have to submit it by tomorrow, uh, while before the start of the session. Okay. So that's pretty much it regarding from my side regarding Android UI development. But if you have any questions, feel free to ask me over the group. Okay. And thank you, Harsh. And I'm gonna see you all tomorrow at the same time. We will be learning more about the Jetpack compose. Okay. कल हम थोड़ा बहुत UI बनाना सीखेंगे, basic functionalities देखेंगे. Okay. So that's pretty much it. See you all tomorrow. Thank you for giving your time. Have a nice day.